नाउ विल कंटिन्यू प्लस 51 टू 100 क्वेश्चन जो दिया गया है उसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, 51 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करिकुलम चेंज। कौन सा फैक्टर करिकुलम चेंज को इन्फ्लुएंस करता है। ग्रोथ इन नॉलेज सही है, टेक्नोलॉजी चेंज सही है, नीड्स एंड एस्पायरेशंस ऑफ पीपल ये भी सही है। जॉब प्लेसमेंट नहीं है, एबिलिटी ऑफ कॉम्पिटेंट टीचर्स ये नहीं है। Curriculum change envisages which of the following? Curriculum change envisages change in aims and objectives, change in contents, change in infrastructure, change in methods of teachings and change in evaluation processes। तो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, बाकी चारों उसका आंसर्स है। ठीक है, 53 which of the following statements are true for historical research design। हिस्टोरिकल रिसर्च डिजाइंस के लिए कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, हमें वो देखना है। ठीक है, यहाँ पे है हमारा क्वेश्चन, ये है 60 नंबर क्वेश्चन, देखते हैं। तो मोस्टली बेस्ड ऑन क्वालिटेटिव डाटा, देन डाटा आर एग्जामाइंड फॉर वैलिडिटी एंड ऑथेंटिसिटी। लास्ट वन, कंटेंट एनालिसिस इज यूज्ड फॉर डाटा ट्रीटमेंट। इतना है। टेस्टिंग हाइपोथेसिस इज एन इंटीग्रल पार्ट, ये गलत है। फाइंडिंग्स कैन बी जनरलाइज टू अदर सिचुएशंस, ये भी नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू फॉर रिलायबिलिटी ऑफ ए रिसर्च टूल। एक रिसर्च टूल का रिलायबल होने के लिए कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। रिलायबिलिटी इज फिक्स्ड फॉर ए गिवन टेस्टिंग रोल, ये नहीं है। It is correlation of scores on the testing tool itself, ये सही है। Reliability can have negative value, ये नहीं है। It varies from sample to sample, ये सही है। It is affected by variance of scores, ये भी सही है। तो BDE in Flanders interaction analysis categories FIAC, Flanders interaction analysis categories FIAC, which of the following are related to indirect teacher talk। कौन सा होगा, ये होगा acceptance of feelings, praising or encouraging, using student ideas in his or her talk by the teacher। Which of the following learning outcomes based on behaviors belong to the category of being high in terms of taxonomy categories in cognitive domain? Analysis, creation, and critical thinking। In which of the following set is stipulated the highest level category of taxonomies in cognitive, affective, and psychomotor domains? Evaluation, characterization, and naturalization। Which of the following statements are indicative of formative assessment model? The teacher encourages students to answer. Teacher asks questions to motivate students, and the teacher provides prompts to help students to avoid incorrect responses। बाकी दो जो है वो नहीं होंगे। तो टीचर assess the comprehension of students towards the end of the end में कभी नहीं होता फॉर्मेटिव। तो टीचर judges the level of performance after the unit test, after unit test ये नहीं होता, वो बीच बीच में होता है। According to Robert M. Gagne, which learning types precede concept learning? concept learning को कौन सा learning type precede करता है, वो है साइन लर्निंग, वर्बल एसोसिएशन लर्निंग एंड एसआर लर्निंग। उसके बाद हम देखेंगे हमारा 60 का क्वेश्चन। 60 का क्वेश्चन क्या दिया गया है। The ethical and social issues of information system, ethical and social issues of information systems are basically more important these days because of increased use of internet and use of interconnected information system। यूज ऑफ लर्निंग न्यू टेक्नोलॉजी नहीं है, मॉनिटरिंग ऑफ एम्प्लॉयज इन द इंस्टीट्यूशंस नहीं है, कॉस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम्स भी नहीं है। 61 फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ स्टेटमेंट्स आइडेंटिफाई दोज व्हिच describe the characteristics of transactional leadership style, role and goal clarity, emphasis on competency building, monitoring people।
how how would you as a teacher identify students with माइल्ड लर्निंग इम्पेयरमेंट्स इन क्लास? अच्छा, तो हम कैसे उसको रिकॉग्नाइज करेंगे, ये अपने हिसाब से करना है। इसका आंसर होगा तो द लर्नर कीप्स हैंड नियर हिज और हर ईयर व्हेन यू स्पीक टू हिम। द लर्नर leans towards you in an attempt to hear better. The learner squeezes his eyes and looks at you. ये तो नहीं होगा। The learner does not respond to your calling unless someone tells him. इसमें से होगा हमारा, ये तो होगा the learner keeps hand higher, ये नहीं होगा बी, I think सी। Which of the following are barriers in the way of education to be inclusive? बैरियर होगा पेरेंट्स डू नॉट सेंड चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स टू स्कूल, ठीक है। नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ सुइटेबली ट्रेंड टीचर्स, ये भी है। स्कैर्स फाइनेंशियल प्रोविजन फ्रॉम द गवर्नमेंट, ये भी है। चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स गेट लीगल प्रोटेक्शन, ये नहीं है। व्हाट आर द मेजर्स सजेस्टेड बाय यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ पर्सन्स विथ डिसेबिलिटीज, UNCRPD? Ensure full and equal enjoyment of human rights, ensure fundamental freedom to all persons with disabilities, promote respect for inherent dignity of such children, ensure large legal actions, illegal actions नहीं है। Which of the following are needed for inclusive education to be successful? Availability of trained teachers in school, ये सही बात है। Availability of infrastructure in schools, ये भी सही बात है। फिर appointment of trained counselors in school, ये भी सही बात है। Asking parents of children with special needs to send their wards to special, ये नहीं है। 66 sorry, evaluation of प्रकृति, नेचर एंड फंक्शन देखते हैं। महत द ग्रेट, महत द ग्रेट, इट इज कॉस्मिक इन नेचर एंड फंक्शंस एज ए साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ नोइंग। ईगो और अहंकार, it is the principle of individualization and its function is to generate self sense. Mind or manas, it is the subtle and central sense organ which synthesizes sense data into determinate perception. Subtle essence are neither the qualities nor the differentia of gross elements nor the functions. उसके बाद है Western School of Thoughts and Teachers role visualized. Idealism, idealism to be role model, to be emulated. Okay, realism, realism का है to impart knowledge, to impart knowledge. Pragmatism, teacher's role visualized as in pragmatism to function as a consultant in problem situation, ठीक है। फिर एग्जिस्टेंशियलिज्म है टू असिस्ट each student personally in his or her journey towards self-realization. Thinkers and works, स्वामी विवेकानंद मॉडर्न इंडिया वर्क किए हैं। रविंद्रनाथ टैगोर गीतांजलि लिखे हैं, ये मैक्सिमम लोगों को पता है। MK गांधी माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ किए हैं। एंड J कृष्णमूर्ति द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम, J कृष्णमूर्ति। फिर देखते हैं आगे इधर सोशलिज्म, सोशलिज्म में क्या है, एक्सप्लेनेशन क्या है सोशलिज्म का देखते हैं। पॉलिटिकल आइडिया दैट ऑल पीपल आर इक्वल एंड रिसोर्सेज शुड बी इक्वली शेयर, ये है सोशलिज्म का एक्सप्लेनेशन। सेक्युलरिज्म, सेक्युलरिज्म मतलब स्टेट हैज नो रिलीजन, इट इज नाइदर प्रो नॉर अगेंस्ट एनी रिलीजन। डेमोक्रेसी, ए नेशन state that has an elected government and elected leader, ये होगा क्या, नहीं। A system in which government is elected and managed by the people of the country, ये होगा democracy. Republic, a nation that has elected government and elected leader, ये है
रिपब्लिक का आंसर। फिर अंडरलाइंग पर्पस लेवल ऑफ टीचिंग, द मेन ऑब्जेक्टिव इज टू नो द सब्जेक्ट इन डेप्थ एंड डेवलपिंग इंसाइट लीडिंग टू क्लैरिटी ऑफ स्ट्रक्चर्स। ये होगा हमारा अंडरस्टैंडिंग लेवल। द मेन एम्फेसिस इज ऑन orderly presentation of thoughts leading to their longer retention. Yoga memory level. The basic purpose is to engage students in clear, coherent and critical thinking leading to patterns of thoughts. ये किसमें होगा? रिफ्लेक्टिव लेवल में होगा। और लास्ट में पर्पस इज टू प्रमोट सेल्फ फीलिंग्स लीडिंग टू ए सेंस ऑफ फ्रीडम। सेंस ऑफ फ्रीडम किसमें होगा? ऑटोनोमस डेवलपमेंट लेवल में होगा। उसके बाद थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, द मेन प्रोपोनेंट्स एंड कंटेंशंस। थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस क्या है? मल्टीपल फैक्टर थ्योरी। मल्टीपल फैक्टर थ्योरी में थॉर्नस्टोन इंटेलिजेंस इज ओलिगार्किक इन नेचर, ठीक है। देन थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस में गार्डनर दिए थे थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। Intelligence is a capacity with component processes and should not be confused with a learning or cognitive style. Theory of fluid and crystallized intelligence. ये किसने कहा था? केटल। Intelligence is neither completely monarchic nor oligarchic or anarchic. उसके बाद है कोपिंग थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। कोपिंग थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस मतलब स्टर्नबर्ग ने दिया था। इंटेलिजेंस कैन बी टॉट एंड द क्लासरूम इज द लॉजिकल प्लेस टू टीच इट। फिर देखेंगे EI डायमेंशंस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ अवेयरनेस नॉलेज ऑफ ट्रूथ फीलिंग्स एट द मोमेंट। सेल्फ मैनेजमेंट, सेल्फ मैनेजमेंट हैंडलिंग वंस इमोशंस टू facilitate rather than hinder the task at hand. Self motivation, self motivation staying in the course towards desired goals. Empathy, empathy मतलब being able to sense what others feel and want. Social skills, social skills ability to guide others emotions and the way they act. Given below are two sets, देखते हैं steps of Morrison's teaching model and description of steps. Exploration, exploration मतलब ascertaining the previous task related behavior of students. फिर presentation, presentation में होगा describing the theme to be taken up for discussion. Assimilation, assimilation में होगा helping students to relate presented material to their internal self. Organization, organization में होगा asking students to present their acquired ideas without help of teacher. Recitation, recitation मतलब होगा revisiting the material. Proponents and knowledge construction procedure. जेन पियाजेट ने क्या दिया था हमारा? जेन पियाजेट एसिमिलेशन, एकोमोडेशन, एडप्शन बेस्ड कॉग्निटिव अप्रोच। उसके बाद कौन है? जॉर्ज बर्नर ने एक्टिवेशन, मेंटेनेंस एंड डायरेक्शन बेस्ड एक्सप्लोरेटरी लर्निंग अप्रोच। डेविड ओसाबेल ने क्या कहा था? एडवांस्ड ऑर्गेनाइजर, एक्सपोजिटरी ऑर्गेनाइजर एंड कंपैरेटिव ऑर्गेनाइजर्स बेस्ड लर्नर अप्रोच। और एक बाइगोस्की, इन्होंने क्या कहा था? पीयर ग्रुप बेस्ड इंटरेक्टिव एंड सोशल लर्निंग अप्रोच। Various components of teacher education, various components of teacher education and rationale for providing such components. क्या दिया गया है? Foundation courses for enabling the students to understand the basic principles underlying teaching learning process. Then elective courses for promoting application of knowledge and skills. Practical and practicum courses for providing situations of applying pedagogical
knowledge of skills, enhancing professional competencies courses for broad basing the competencies of teaching. Which of the following sequence is formulations of behavioral objectives? Behavior to be specified, conditions in which behavior will occur, and criteria of acceptability of the behavior. Which of the correct sequence in the development of learning theories? लर्निंग थ्योरीज के हिसाब से करेक्ट सीक्वेंस क्या है? थॉर्नडाइक्स कनेक्शनिज्म, पेवलोव्स क्लासिकल कंडीशनिंग, स्किनर्स ऑपरेंट कंडीशनिंग, टॉलमैन्स साइन gestalt, cognitistic theory, and constructive theory. Which of the following is the correct order of measurement scales in increasing order of accuracy, precision, number of operations used? Nominal, ordinal, interval, and ratio. Nominal, ordinal, interval, and ratio. The correct sequence in the development of educational technology in India is reflected by which of the following? Audio ads, video ads, audio video ads, ICT supported ads. Which one of the following indicates Deming's system of profound knowledge? Optimization, variation, knowledge, and psychology. The acronym DMAIC of Six Sigma method stands for define, measure, analyze, improve, and control. Keeping in the view the continuous cycle of process improvement, which of the following is the proper sequence? Plan, do, check, act. What is the correct sequence of actions in conducting an interventions based action research in education? Plan, act, observe, and reflect. Which of the following is the correct sequence of staff recruitment? Job analysis, advertisement, interview, selection, and appointment order. In the process of drawing a random sampling, which of the following process is in the order of sequence? Define target population, decide sample size, list all the units of target population, and drawing the sample by randomization. Given below are two statements. देखते हैं assertion और ये जो हमारा रीजन है करेक्ट है या नहीं है. ठीक है. देयर आर देयर हैव बीन कॉन्शियस एफर्ट्स टू ब्रिंग टुगेदर ऑल टीचर एजुकेशन programs at various stages, leading to stage specific and program specific different forms of knowledge based. ये सही है. NCT acquired statutory status and brought a discussion document on teacher education. ये सही नहीं है, ये गलत है. फिर उसके बाद है यू कैन फिक्स पीपुल विथ फिक्सेशन, obsessions, and compulsion who put work ahead of health and family, but this is not normal. Work after all is only work. Yes, this one is true. The key to success as a manager is intervening effectively, doing the right things at the right time. ये भी सही है. देन इफेक्ट, लेकिन एक्सप्लेनेशन सही नहीं है. इफेक्टिव लीडर मोटिवेट्स पीपल, ये सही है. पीपल में भी सेल्फ मोटिवेटेड टू गेट देयर बेस्ट, ये भी सही है. उसके बाद ए बजट इज ए बैलेंस्ड एस्टिमेट ऑफ एक्सपेंडिचर्स एंड रिसिप्ट्स ऑफ ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम, सही है. इन द hands of an educational administrator, the budget is a record of past performance, a method of current control, and a projection of future plans. सही है, ये भी explanation. उसके बाद sorry. In ancient India, the development of the inner nature or character of the student was deemed as one of the essential objects of education. Mere intellectual development without the development of character will defend the very ends of studentship. सही है, लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, लेकिन सही है. बाकी जो दोनों कॉम्प्रिहेंशन दिया गया है, बाकी दो कॉम्प्रिहेंशन दिया है, इसको खुद पढ़ के करना है. ठीक है, बस खत्म. थैंक यू.